Morning everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and this is our daily Hindu editorial analysis. Can you hear and see me clearly? Everyone? Am I clearly visible and audible? Good morning guys. Am I visible and audible to everyone? Hi, good morning. Clearly visible and audible. Alright, so 14th of December, we're going to take two articles. One is from the Hindu and the other is from the Indian Express. Both are long articles. Both are going to take time. I'll try to wind up the class sooner, but I'm not really sure if it is going to end before an hour because there's a long story that I need to tell you. And apart from that, we have another article that's a lengthy one. Although I've trimmed it a lot to make it shorter, but yet it still remains a longer one. So we're going to be discussing both of these today. But before we start off with that, if you're targeting CLAT 2022, we have a few new batches that we've launched. The first is batch 5, that's a bilingual one. So if you're comfortable with partially Hindi, partially English, a bilingual program, this batch is for you. If you are targeting a batch in English, then for 22, this is the batch for you. I'll be teaching in this batch, that's in English. So please identify what's your mode of conduct that you're more comfortable with, and then you can enroll yourself for either of the batches quickly because you don't have a lot of time left. If you're targeting CLAT 2023, we have a new batch 6 for you. And इस बैच में आप बहुत ही कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत सारी क्लासेस होती जाएंगी. अगर आप डिले करते जाओगे, आपके पास अब एक साल भी नहीं बचा है, तो इसलिए जल्दी से पढ़ लो इस बैच के. ये क्लास में क्या करेंगे? We'll take one quote of the day जो आप देंगे मुझे. 3 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे कल के वोकैबुलरी में से. 2 आर्टिकल्स लेंगे, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. आज वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब्स. Okay, for some reason I don't have an access to these slides, so ये नहीं करेंगे हम. In the end, tone of the author करेंगे और आप मुझे summary बताएंगे. Yesterday, I'm sorry, I just could not check your summary because I did not get time. I'm going to do it today. So आप दोनों articles की summary लिखेंगे under my video in the comment section, and मैं दोनों newspapers के आज के articles का आपको roundup बताऊंगे. What are the important articles that you should be reading and what are the articles you would give a skip to. Okay, yes, we're going to do story of Julian Assange. Yes, I'll tell you exactly what happened. Although अगर आप regularly मेरी class में आते हो, आपको पता होगा ये story क्या है. मैंने आपको पहले भी बताई है. But no, Arshita, it doesn't. But now, since he's in news again because of the extradition, we are going to talk about him in detail again. We need to know that. Good morning, everyone in the app as well. Okay, so yes, WikiLeaks founder. Here we go. Quote of the day कोई लेके आया है? Work hard until you don't get your destination. Yes, बिल्कुल सही है. हार्ड वर्क करते रहो जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाओ. और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी. करते रहो. ओवरवेलमिंग होगा लेकिन फिर भी करते रहो. आपके पास. नेक्स्ट चलते हैं रिविजन पे. What's the answer to this question? Succeed in persuading or leading to do something. Is it systemic? Is it induce? Is it pedagogy? Or is it embed? What is the answer here? Anyone? What's the answer? Okay. The app. Yeah, the answer certainly is induce. Induce. जब आप किसी को अर्ज करते हो, परसुएड करते हो कोई काम करने के लिए, एक्शन देने के लिए, induce. Usually or unusually or disproportionately large or excessive. Is it merely? Is it inordinate, juxtaposed, or peculiar? What is it? Is my voice lagging in between? In the app?
Okay, Ayush, I did not get your question clearly, but I'll still repeat. Are you trying to ask what is the purpose of identifying tone every day? Or are you trying to ask me how to identify the tone every day? Please reiterate your question. Yes, lagging? Okay, give me a second. Give me a second. Let me use another microphone, okay? Let me use another microphone. Give me a second, everyone. Please give me a minute. I'll change my microphone. Hello. Now is it better? Is it still lagging? Please confirm. Is it better now? सही है, मैंने चेंज कर दिया. बेटर है क्या, बताओ? ठीक है? Okay, let's start. Much better. Okay. So here we go. So the answer here is inordinate. Inordinate is excessively large and huge. Let's move to the next question. The state of being barred from one's native country is typically for political and punitive reasons. Is it stigma, diminish, mitigate, or exile? ये सबका सही होना चाहिए. What is it? ठीक है. आंसर क्या होगा? D. Yeah, exile. The answer is exile. Yes. ठीक है, exile. So just a second, guys. Alright, so आज vocabulary नहीं है. For some reason, I don't have access to the slides. I did not get the slides in the morning from the content team, so I'm not going to take them. Story सुनते हैं, ठीक है? Story है WikiLeaks की. WikiLeaks founder Julian Assange की. And it's a very, very, very old story. 2006 से start होती है story, ठीक है? तो इसको story के जैसे सुनोगे तो ये याद रह जाएगी, इसका डेटा याद रह जाएगा. डेटा के जैसे पढ़ोगे तो कभी भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो स्टोरी का बैकग्राउंड देखते हैं कहाँ से हुआ. इट्स अ grueling, gruesome, time-taking, exhausting life that Julian Assange has had. Now, 2006 में Julian Assange ने कुछ और लोगों के साथ मिलके WikiLeaks he founded WikiLeaks, and the purpose of WikiLeaks was, as the name says, wiki and leaks. So the purpose of WikiLeaks was to leak confidential data. For example, एक Facebook whistleblower ने, मैं आपको examples दे रही हूँ, एक Facebook whistleblower ने अभी ये data leak किया था that Facebook ऐसे पोस्ट्स को बैन नहीं करता लाइक्स के और व्यूज के लालच में. Those posts that can create social disharmony, communal violence. So ऐसे रेवोल्यूशंस काम था WikiLeaks का करना. प्लस बहुत सारे बिग रेवोल्यूशंस अबाउट डिफेंस, अबाउट बिग गवर्नमेंट्स ऑफ huge countries, developed countries. So it did a lot of revolutions. Now, obviously आप किसी के बारे में कुछ रिवील करेंगे तो इसके दो साइड्स होते हैं, ठीक है? जैसे हमारे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, जो पिंडोरा पेपर्स से निकल के आया. पिंडोरा पेपर्स छोड़िए, जो what was that Israeli website's name? I just forgot that name. What was the Israeli website's name? Anyone? Can anyone remind me that? Wopsy? No, nothing yet. क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा. Pegasus. Thank you. Yes, Pegasus. So
Pegasus, yes, I was referring to Pegasus. So now Pegasus में जैसे क्या हुआ कि गवर्नमेंट पे एक्यूजेशंस आए, ठीक है. नाउ गवर्नमेंट कैन रिएक्ट इन 2 ways. The government can work on finding out the person who is guilty, or the government can accuse the whistleblower of doing something wrong. और वो पकड़ लेगी विसल ब्लोअर को कि तुम चलो जेल के अंदर, तुम पे लगा दिया हमने सीए, और तुम पे लगा दिया हमने सेडिशन, और तुम पे लगा दिया हमने यूएपीए, जो भी चार्ज लग सकता है वो लगा के और तुमको हम जेल में डाल देंगे क्योंकि आप डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हो. 2 तरीके हो सकते हैं. हमारी कंट्री ने कैसे हैंडल किया आपको पता है. आई विल नॉट टेक द ब्लेम ऑन माई शोल्डर्स. ऐसा ही कुछ यूएसए के साथ हुआ, ठीक है. सो बाय एनएसओ, यस. ऐसा ही कुछ यूएसए के साथ हुआ. अब कैसे हुआ यूएसए के साथ, देखो विकीलीक्स ने here we go. 2006 WikiLeaks was set up, and they brought anonymous people who, and WikiLeaks wouldn't disclose their names, who would make revelation about top secret information of the whole world. Okay, Julian Assange was the founder, and of course बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस करी थी विकीलीक्स ने जो कि पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को हिला सकती हैं, ठीक है. अब ऑब्वियसली इससे बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैप्पी तो रहेंगे नहीं. तो क्या क्या चीजें विकीलीक्स ने रिलीज करी जो चीजें डिस्टर्बिंग थी बाकी कंट्रीज के लिए, देखते हैं. The website has released numerous trove of documents known as data information dumps for the 15 years of being active. Some of the most famous 4 lakh secret military reports related to the war in Iraq and then war in Afghanistan. तो इराक और अफगानिस्तान वॉर के बारे में भी बहुत सारी चीजें रिवील करी. In 2010, the platform released the now infamous collateral murder video, which shows soldiers in a US Apache helicopter killing dozen people on the ground in Baghdad, including 2 Reuters journalists. ये वीडियो वायरल हो गया. यूएसए ऑब्वियसली हैप्पी नहीं था इस चीज के साथ. यूएसए को रिएक्ट तो करना ही था. क्या किया यूएसए ने, और भी बहुत सारे कंट्रीज के अगेंस्ट जूलियन असांज, ही इज द मैन. नाउ अभी ये पिक्चर जो है ये इक्वेडर एम्बेसी से है. इक्वेडर एम्बेसी कैसे पहुंचे जूलियन असांज, ये भी देखते हैं. What happened to Assange after that? अब आप ऐसी रेवलेशन करोगे कंट्रीज के बारे में, स्पेशली यूएस के बारे में, स्पेशली तब जब ट्रम्प पावर में आए थे. He is not going to take that crap. So he said, okay, you give me a second. Yeah. So Swedish authorities issued an arrest warrant for Assange in 2010 over charges of rape and assault cases, sexual assault cases. तो स्वीडिश अथॉरिटी ने बोला कि हमको असांज चाहिए, एक्स्ट्राडिशन होगा उसका और हम इसको रखेंगे अपने पास. फिर वो यूके से भी आ गया. यूके में भी उनको इम्प्रिजन कर दिया गया where he was living at that time to await the result of an extradition request to face the charges in Sweden. स्वीडन बोलता रहा हमको दे दो, तब तक वो यूके की जेल में थे, ठीक है. 2 साल बाद Assange skipped bail and sought asylum in Ecuadorian embassy in London, where he would spend the next 7 years. Same country में वो इक्वेडर की एम्बेसी में जाते हैं. इक्वेडर की एम्बेसी से बोलते हैं कि मुझे असाइलम चाहिए. इक्वेडर की एम्बेसी बोलती है आपको असाइलम मिल जाएगा, आप रह सकते हैं हमारे एम्बेसी में. तो वो 7 साल तक उसी कंट्री में जहां वो अक्यूज्ड है, and he is supposedly a culprit, he has to undergo a trial, he has to be in the jail for that. वो उसी कंट्री की एम्बेसी में इक्वेडर के अंदर बंद है. यहां तक उनको कोई शूट नहीं कर सकता. जैसे ही उनका एक हाथ भी बाहर निकलेगा तो उन पे अटैक किया जा सकता है. आपको पता है एम्बेसी के लॉज कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. 7 years तक वो उस एम्बेसी के अंदर ही बंद थे. यस, ओके. Then what happened? Meanwhile, relation between Assange and Ecuador had begun to sour. जब तक असांज और इक्वेडर के रिलेशन अच्छे हैं तब तक इक्वेडर उनको एम्बेसी देगा, 7 साल तक एम्बेसी एग्जाइल देगा, असाइलम देगा. एंड असांज और इक्वेडर, गाइस आई एम जस्ट नॉट वेल टुडे, मैं आई एम अनएबल टू थिंक, आई एम सो सॉरी. असांज और इक्वेडर के रिलेशनशिप सार होने लग गए. एन एक्यूजेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट लेनिन मर्डर, रिपीटेड वायलेंस एट द एम्बेसी आने लग गए. अब ये रिपीटेड वायलेशंस रियल थे या डेलिबरेट थे, बिकॉज उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा. एंड पॉसिबली देयर वाज अ कंट्री सुपीरियर देन इक्वेडर जो
सप्रेस कर रहा था इक्वेडर को एक डिसीजन लेने के लिए. इट रिजल्टेड इन असांज बीइंग एविक्टेड. आपको क्लास के बाद ना वो वीडियो देखना उनके एविक्शन का, ठीक है. So I'll not tell anything about the video, just go and watch after the class. So it resulted in Assange being evicted and he was filmed in April 19 being, okay, so it says being dragged from the building out. Assange was found guilty in skipping bail and pending the US request of extradition. सबको एक्स्ट्राडिशन चाहिए था, यूएस को चाहिए था क्योंकि वो इक्वेडर की एम्बेसी में थे, स्वीडन को चाहिए था एंड स्वीडन ड्रॉप द रेप केस इन नवंबर 2019. तो ये तो 19 की बात है. अब उसके बाद एक्स्ट्राडिशन में हुआ. एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट हैपेंड इन द एक्स्ट्राडिशन केस? व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? कौन बताएगा? Janvi, the video of Assange being dragged out of Ecuador embassy, that video. Extradition क्या होता है? Yeah, yes, Shreya, I'm actually not feeling really well today. Transferred, okay. Handed over, that's a better term, handed over to another country जहां पे हमारी कंट्री किसका एक्सेप्टेशन डिमांड कर रही है. चलो ऐसे समझाओ, उससे सबको क्लियर हो जाएगा. एग्जैक्टली. यस अंकिता, डिपोर्ट भी बोल सकते हो आप. यस, हमारी कंट्री किसका एक्सेप्टेशन डिमांड कर रही है? बहुत सारे लोगों का कर रही है. अभी लेटली बहुत सारे लोग न्यूज में आए हैं. कौन बताएगा? यस, विजय माल्या, नीरव मोदी. यस, एब्सोल्युटली यस. तो हम बोल रहे वापस में जो हमारी कंट्री में केसेस है उनके अगेंस्ट, बट डिपेंड्स ऑन द कंट्री जो उनको असाइलम दे रहा है, विजय माल्या, नीरव मोदी. सो हमारी कंट्री असाइलम, हमारी कंट्री एक्सट्रेडिशन डिमांड कर रही है. वैसे ही जूलियन असांज के साथ था. सो यूएस उनका एक्सट्रेडिशन डिमांड कर रहा था एंड फॉलोइंग अ 4-week हियरिंग जज रूल्ड दैट असांज शुड नॉट बी एक्सट्रेडिटेड टू द यूएस. उन्होंने बोला नहीं भेजा जाएगा. अब इसमें क्या रीजनिंग थी कोर्ट की, ये देखो. शी एक्सेप्टेड द केस फ्रॉम द डिफेंस टीम दैट इट वुड बी ऑप्रेसिव टू अलाउ असांज टू बी सेंट टू अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फैसिलिटी इन अमेरिका when his mental health is not good. So he is a father of 2 children. He's been living in asylum. That to asylum में वो free movement नहीं है उनका कंट्री में. 7 साल वो एक एम्बेसी के अंदर बंद थे, right? And with all the allegations coming on his head, he is not able to freely function and everything else. His mental health is deteriorating. And इस केस में जब उनके लॉयर्स ने बोला कि वो एक ऑप्रेसिव वो एक कंफाइनमेंट, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रह सकते हैं, उनको फ्री मूवमेंट चाहिए, ये बात कोर्ट ने मानी और उनको बोला ठीक है हम एक्सट्रेडिशन नहीं देंगे यूएस को. नोटिंग दिस, yes, but on December 10 the UK High Court overturned the ruling of this judge, the lower court judge, paving the way for Assange to be extradited to the US. अब ये है लेटेस्ट न्यूज, ठीक है. हाई कोर्ट, उनके हायर कोर्ट्स ने बोल दिया है that he should be extradited to the US और यूएस ने ये प्रॉमिस किया है that we are going to be not keeping him into confinement. उनकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जब उनकी हियरिंग्स होती थी लोअर कोर्ट्स में तो जूलियन असांज नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ हिज मेंटल हेल्थ. अब इसको ऑपोजिशन एक अलग तरीके से दिखता है. वो कहता है इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी कि तुम हियरिंग में नहीं आ सकते हो. ये आप एग्जैजरेट कर रहे हो उनके लॉयर्स. और उनके लॉयर्स कह रहे हैं दैट ही इज एक्सट्रीमली सिक, ही इज अनफिट मेंटली टू अटेंड अ हियरिंग इन द कोर्ट एज वेल. तो उनकी जेल से अंदर ऑनलाइन हियरिंग हुई थी, ऐसा हुआ था उनके साथ. So this was the background of the story. Now let's come to the Hindu article that talks about this whole story. I hope you've understood the background here. Good to go, everyone? Yes, now we'll go back to USA. Yes. Okay, so let's now understand this passage here. Endless ordeal and extradition of Julian. Endless ordeal तो है जूलियन असांज के लिए, क्योंकि कितने सालों से वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहे हैं, केसेस उन पे खत्म नहीं हो रहे हैं, only because he made revelations about a big country. So the ruling of the High Court in London that WikiLeaks founder Julian Assange, currently in British prison, can be extradited to the US. So finally High Court ने बोल दिया कि अब उनको US हम extradite कर देंगे. Where he is facing charges under the Espionage Act is a blow to those who believe in press freedom. Now, why? मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई.
Fast key. You tell me, why can this case of Julian Assange be a blow to the freedom of press? Why? Anyone? No, 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 Abhinav. Asylum is not confinement. That too when I'm not well, Abhinav. Abhinay, sorry. I would rather stay unwell with that. Why is this? Nay, Verma. My opinion does not matter here, but I think he is. Exactly, Ali. Yes, a lesson that people cannot publish anything they wish against big entities, superpowers. You can't publish them. This is killing the freedom of press. अब यूएस के अपने खुद के रीजनिंग है. They say that he is not a journalist. तो ये प्रेस का फ्रीडम तो किलिंग है ही नहीं. आप बात कैसे भी घुमा दो. Others will be afraid too. Yes, he was just a whistleblower. So a lower court earlier this year had rejected the US request. Yes, मैंने आपको बताया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए. Because अगर एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, he may be driven to suicide by the American jail conditions. But the High Court, after receiving some assurance from the US authorities that Assange would not be held in restrictive prison conditions, decided to allow the extradition. उन्होंने बोला कि ठीक है, यूएस प्रॉमिस कर रहा है कि हम उनको बाकी प्रिजनर्स की तरह नहीं रखेंगे, कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे, आप हमारे पास भेज दो उनको. The US accuses him of conspiring to hack into defense database to get sensitive unclassified information. कौन सी unclassified information? वो वीडियोस जहां आप शूट कर रहे थे जर्नलिस्ट्स को और लोगों को. The leaks, the USA's put lives at risk. So वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर लिया है जो कि बहुत हाईली कंट्रोवर्शियल है और अब ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है. If convicted, Mr. Assange 50 could face up to, okay, he's already 50, he may face up to 175 years in jail. His legal team will now appeal and the legal process could drag on for years and he would still remain in jail. But these cases have already put him in one or the other form of confinement for years. अब देखो अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो केसेस चल रहे हैं और ये एक्स्ट्राडिशन की जो कहानी चल रही है और वो जो असाइलम ले रहे थे, ये सब चीजों की वजह से वो कन्फाइनमेंट में तो है ही, चाहे जेल में हो चाहे एम्बेसी में हो. He took refuge in Ecuadorian embassy in London in 2012 while facing a probe and accusation of sexual assault in Sweden, जो बाद में वापस ले लिया गया. It was dropped later on, right? और वो 7 साल तक उस embassy में confined थे. Okay, so in 2019, after his arrest from the embassy, he was jailed for 50 weeks in UK for breaching his bail conditions. सिर्फ इसके लिए उनको वहां जेल में रख दिया and he is now in London's Belmarsh prison. The documents WikiLeaks released on the Iraq and Afghan wars, मैंने आपको बताया क्या documents थे जहां पे videos भी surface हो रहे थे, which were published by almost all media houses, exposed official crimes and cover-ups. And US has been infamous for doing this. It has been. So any responsible democratic government should have taken up. ये देखो, this line is a brilliant one. ध्यान से पढ़ो इस लाइन को. Any responsible democratic government should have taken action against those who committed the crime. ठीक है, अगर आप responsible है, जो कल्प्रिट आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे. लेकिन यूएस ने तो बोला नहीं, हम तो बोले थे नहीं, तुम पब्लिशर आओ अब हमारे जेल के अंदर में, हम तुम्हें 175 years के लिए इम्प्रिजन करेंगे. It was the other way around. Yes, 175 years. ये हिंदू की न्यूज है. तभी मैं आपसे बोलती हूँ मिक्सचर पढ़ा करो हमेशा, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों का, और रोज मेरा राउंड अप देखा करो वीडियो के एंड में, क्लास के एंड में, बिकॉज राउंड अप देखोगे तो आपको पता लगेगा कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. कल का वीडियो सबने देखा था, एडमिन रमनाज स्पीच और सीजीआई, नहीं देखा तो देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है. The Trump administration unsealed the indictment against Mr. Assange for violating the Espionage Act, a First World War era law, after his 2019 arrest. The US government argued that he was not अच्छा, so देखो जो भी रेवोल्यूशन होते हैं, जर्नलिस्ट करता है तो लॉ अलग हो जाता है उनका, जर्नलिस्ट नहीं करता है तो लॉ अलग हो जाता है. He says वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक
data finding agency hai. But beyond the definition of journalism, what the US tries to do was to use a controversial law to punish someone. हम भी तो यही करते हैं, है ना? Using a controversial law to punish somebody who published unpleasant truths about powerful entities. इसका काम तो exactly यही है हमारी कंट्री में, है ना? और यूएपीए are we any different from US right now? If he is extradited or convicted, it would set a bad precedent for press freedom and investigation journalism, raising questions about the protection of the First Amendment's offer to the press. That is, क्या प्रेस फ्री है, क्या प्रेस के पास फ्रीडम है? अगर उनका अरेस्टिंग हो गया, अगर उनको पनिशिंग हो गई, तो ये प्रेस के लिए it's going to be a black day. That means we don't have the liberty to say anything or publish anything or write anything. Yes. A person wouldn't probably live for 175 years, so why don't you just a life imprisonment? So Palak, it's to show the severity of the crime. ज़्यादा जो imprisonment दिखाई जाती है ज़्यादा years की, वो ये दिखाई जाती है कि आपने इतना severe किया कि अगर आप जिंदा भी रह जाओ तो आप 175 years तक जेल में रहोगे, इतना severe है आपका crime. Yes, got this? Okay, so here we go. It is ironic that the administration of President Joe Biden, who convened a global summit of democracy last week, because summit of democracy inverted commas हैं, and emphasized the role of free press. उन्होंने बोला ये summit of democracy है, press का role बिल्कुल free है, press has the freedom, is following Mr. Trump's policies and pursuing Mr. Assange. यानी वो आप एक तरफ summit of democracy करते हो और एक तरफ Assange को extradite करने की बात कर रहे हो. If the US and the UK, among the world's oldest democracies, are serious about the proclaimed commitment to press freedom, they should take steps to set Assange free. So if you genuinely want the freedom of press, then Assange should be sorry guys, set free. The ordeal of the free world has put this man in for exposing abuses of power and has taken away years of his life and affected his health. This should not go on forever. This has to come to an end. The extradition needs to be cancelled. Tone of the author, everyone. Okay. Absolutely, Divjot. You have a point. Yes, Shafia, it didn't. Yes. Yes, Akshit, that is the paradox here. Tone. Everyone, what's the tone? अभिनव, asylum का मतलब बच्चे आप लेट आए क्लास में. अभिनव, the second अभिनव in the app. मैंने ये शुरू में समझाया था asylum क्या होता है. Asylum होता है जब आप एक कंट्री, इनफैक्ट कल की क्लास में भी समझाया था मैंने आपको, जब आप एक कंट्री में कुछ गलत करके और कहीं और किसी और कंट्री में आप शरणार्थी होते हो, that is when you seek for asylum protection from that country against the country where you have committed a crime. Okay? Sharnarthi, I'm not really sure if it's the right Hindi word. It's concerning, highly concerning, absolutely concerning and critical. Yes. Concerning. Yes, okay. Like Dalai Lama. Yes. So our country gives him asylum here. No, Satyendra, it's critical and it's concerning, but highly critical. Okay? Purva, that's a paradox. Okay? So, all right. Now, let's come to the next article. It's a long article, but I've made it short. I've cut some paragraphs in between. And something of this sort can easily come as a reading comprehension in the examination. ऐसे passages बहुत आए हैं last year throughout multiple sections. Critical reasoning, English, and something of this sort can be asked again in the examination. So, how the pandemic has worsened inequality in India. Already, our country was full of inequality, but inequality in terms of what? For those people who were there in my English and CR Booster course yesterday, we took an article on inequality. याद है ना? So,
Purva, I think you should have solved that. You would have solved that. So आज एक similar passage है. Inequality in terms of economic inequality. This passage talks about that. But ये economic inequality of course is linked to social inequality as well. So और pandemic ने उसको और worse कर दिया economic inequality को, जो already बहुत high था. So let's understand this passage, what it talks about. Any questions, anyone? Arvind, I try to read each and every chat. I try to, but since I have approximately 100 people live and constantly there are things that I have to read along with explanation, I hope you give me the liberty of making this mistake of missing out on your comment. That India is a highly unequal economy is beyond contestation. कोई argument नहीं है, highly unequal economy. Nobody can will argue over that. ये सबको पता है. And that was so before the pandemic struck. और ये हमेशा से रही है. Pandemic ने और severe कर दिया इसको. While precise estimates of the level of inequality in India are hard to come by, household surveys tend to massively underreport consumption, income, and health and wealth. It's hard to dispute the notion that COVID has deepened existing fault lines. तो already हमारे country में rich और poor में gap बहुत बड़ा है. You remember मैंने आपको मुंबई का example दिया था, है ना, rich और poor में कितना बड़ा gap है. This is another example for it. And COVID ने इसको और worsen कर दिया है. Okay? Okay. All right. So the rise in the fortunes of the very rich during this period, when juxtaposed against, juxtaposition कल word किया था, दो contrasting चीजें साथ में. So when the fortune and money of the extremely rich is juxtaposed against the misery of the millions of migrant workers who had to walk back to their villages, is a stark reminder of the extent of economic disparity. और वो जो highly rich थे उनमें से कुछ बहुत और ज्यादा रिच बन गए रेमडेसिविर को वैक्सीनेशन में इंजेक्शन में सलाइन वाटर फिल करके और 60,000 का बेच के. ऐसे भी लोग थे. So and then there were people who were walking by on the roads to their homes because they had no money to go back home as well. So the difference increased. To that extent, the latest addition to the World Inequality Report serves as a useful reminder of the concentration of the income at very top of the pyramid. ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ो. पिरामिड कैसा है हमारे कंट्री में? पिरामिड है रिच टू पुअर, इस डायरेक्शन में चलता है. रिच कम है, जैसे जैसे पुअर पे आते जाते हो वो ब्रॉडर होता जाता है. ये जो टॉप पिरामिड का टॉप पार्ट है, यस दैट्स द रिचेस्ट. ये टॉप पार्ट richest, top 10% earns 57% of the national per capita national income. मतलब ये जो 10% लोग हैं पूरे इंडिया की जो इनकम है उसमें से 57% इनकम तो यही लोग ही अर्न कर लेते हैं. कैन यू इमेजिन दैट डेटा विद इन द टॉप 10%. अब इस टॉप 10% में से जो सबसे ऊपर वाले 1% लोग हैं वो ही 22% अर्न कर लेते हैं. तो पूरे कंट्री का जो इनकम है 1% लोग ही 22% इनकम अर्न कर लेते हैं. तो इसका मतलब इनके लिए क्या बचता होगा, सोचो. डू आई मेक सेंस हियर एवरीवन? Yes, money is okay. An example. All right. Okay, now that is the question, Akshit. Okay. So by and large, the discourse of inequality in India tends to center around disparities in consumption. Inequality किन चीजों में नापी जाती है? One, disparity in consumption. Disparity, difference. Consumption, my ability to purchase a good and service. Disparity in income, मेरी इनकम आपकी इनकम क्या डिफरेंस है? That. And wealth, कितनी inherited है, कितनी hold करते हो? Wealth means properties, homes, buildings, क्या क्या own करते हो? Mansion, empires. But countries like India are also marked with high levels of inequalities in opportunities. हमारी कंट्री में एक और inequality आ जाती है.
जब आप इनइक्वालिटी इन पीपल की बात करो तो इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटी क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी हियर? क्योंकि हमारी कंट्री के लिए स्पेसिफिक है. व्हाट इज द इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी हियर? हु इज गोइंग टू टेल मी? Yes, Prasoon, and that's exactly why I'm not commenting on that. That is exactly why I'm not commenting on rich being rich and poor being poor. It's only the gap that's so huge that we need to uplift the poor. So the rich isn't at fault actually. If somebody is making money legally, what is his fault? क्या गलत किया उसने? नहीं किया ना? Yes. Employment opportunity to be able to find a work. Yes. Yes. Correct. So opportunity भी नहीं मिलती है सब लोगों को सब तरीके से. आपके लिए नहीं है. So ऊर्जस्वी का सेशन देखा था तो ये opportunity actually prove करता है ऊर्जस्वी का सेशन, है ना? In such societies, an individual's class of origin, your gender, that's what ऊर्जस्वी spoke about. Your class of origin, आप कहाँ से आते हो तो आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा job. His household of birth, who is his parents are, tend to have a significant bearing on his education. In fact, the conversation with Urjasvi exactly is coming out here. Your educational attainment, your employment, income prospects, and as a consequence, your class of destination. So, आप कहाँ से आते हो? आप कौन से घर में belong करते हो? आपके parents क्या करते हैं? You know, there are schools that I've heard who interview the parents of what the parents do before taking the child in. And there are points given to educated parents and points deducted for uneducated parents. I'll not name the school, but I know of such schools. So, ये equal opportunity नहीं है, of course. In such countries characterized by low levels of social, I don't know, आज मुझ पे ना कोई sedition या कोई UAPA जरूर लगने वाला है. या फिर कुछ defamation case या tort लगने वाला है मेरे ऊपर आज मैंने इतने लोगों के बारे में इतना कुछ बोल दिया है क्लास में. In such countries characterized by low levels of social mobility across generation. Across generation कैसे हुआ? ये लाइन कौन समझाएगा? Low levels of social mobility across generation. Who's going to explain this line? What does it mean? इस पे क्वेश्चन बन सकता है. What can be inferred from this line? It's only to draw attention, Purva. It's not anything sarcastic here. Yes, Priya, yes. Low levels of social mobility across generations. कौन बताएगा? What is it? Yes, Ali. Discrimination over the years, over generations and generations. The poor continues to be poor. Yes. और बट यहाँ सोशल मोबिलिटी क्या है? आपने तो इकोनॉमिक मोबिलिटी की बात बताई है. सोशल मोबिलिटी क्या है? Anyone? What is social here? Exactly. It also is concerned with the social stature you have, from the household you come from, with the social standing a household has had. जैसे अगर गांव में कोई पंचायत का मेंबर रहा है, सम ओल्ड दादाजी, तो उसकी फैमिली उसी नाम से जानी जाती है ना. या फिर कोई अगर सरनेम्स कैसे बने थे? सरनेम्स ऐसे ही तो बन के आए थे, राइट? So it depends on the kind of social standing you have. और वो generation to generation चलती आती है. Caste based discrimination, backwardness, all of this is also a social mobility, an example of hindered social mobility across generations. Children born in disadvantaged households have a lower chance of moving up in the income ladder. Not because they are not capable of doing it, right? So slumdog millionaire, not everyone can be one, because society आपको allow ही नहीं करेगी एक millionaire बनने के लिए. While these bonds may well have weakened over time in India,
The question is to what degree has the pandemic, which is, अब देखो ये सब चीजें इतने टाइम से थोड़ी सी वीक हो गई हैं, है ना, कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पैंडेमिक ने और ज्यादा इंपेयर कर दिया सिचुएशन को. टू व्हाट एक्सटेंट दीज लर्निंग गैप्स विल राइज और फॉल ओवर टाइम is difficult to estimate. आगे क्या होगा, we don't know that. Needless to say, the larger the gap, the greater will be the effort required to bridge it. और अभी gap इतना ज्यादा है, 1% 22% income earn करते हैं, right? So the gap is so big, it's going to take up a lot of time to bridge the gap between rich and poor. But a drop in the foundation skills and inability to catch up, educational scarring, as some have called it, is bound to impact their life chances. What is educational scarring? What can be inferred from this line? Read this line, everyone. Tell me, what can you infer from it? What is educational scarring? Anyone? What is educational scarring? I have some water by the time. Yeah. आशीष यू मिस्टेकन. जब हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करते हैं बच्चे. ओके, एग्जैक्टली, यस. Needless to say, the larger the gap, the greater will be the effort required to bridge it. But a drop in foundation skill, inability to catch up, educational scarring, lack of access to quality education because of the pandemic, yes, made it even worse. And its impact, it is bound to impact their life and later on. Yes, gap in education due to pandemic. Yes, absolutely correct. Absolutely, yes, Abhinav, correct. Then education, after all, provides pathways to upward mobility. Education की अगर आपका scarred है तो आपका pathway to upward mobility तो खत्म हो गया ना. It will be broken. The gap is still going to remain higher. Then there is the issue of jobs. एक और issue आ जाता है. From the labor market data during this period, three broad trends emerge, all of which have worrying implication to the social mobility. That's basically the trend of jobs. अब देखो ये तीनों को मैंने जो 3 ट्रेंड्स आए थे, मैंने वो तीनों पैराग्राफ हटा के एक जिस्ट बना दिया है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या ट्रेंड्स बता रहे थे. A swift return to higher growth trajectory will heal some of these scars. Growth to higher growth trajectory means हम इस मूवमेंट पे चल रहे हैं. ये अगर मेरा ग्राफ है, मुझे इस तरह से चलना है, ऐसा नहीं करना है ग्राफ. ओके, periods of rapid growth lower obstacles to mobility, create opportunities to move up the income ladder. तो अगर आप ग्रोथ आएगा आपकी कंट्री में तो इनकम लैडर भी ऊपर जाएगी. आपकी कंट्री की ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है आपकी पर कैपिटा इनकम से. बट इफ ग्रोथ इज सबड्यूड एंड अनइवन, if the benefits flow disproportionately to those on the top end and income distribution, अगर growth सिर्फ इन लोगों के लिए है, then among those employed to the more educated skill scenarios as seem to be the case now, then this will only hinder social mobility. तो इन लोगों का upward movement hinder होगा. तो growth सबके लिए होनी चाहिए ओवरऑल कंट्री की. पैराडॉक्सिकली तो ये लाइन ध्यान से पढ़ो, इस पे एक CR क्वेश्चन बन सकता है. Paradoxically though, as high mobility perhaps blunts concerns over high inequality, it is of greater consequence in highly unequal economies. What is the paradox here? What is the paradox the author is referring to here? Read the line again and explain it to me, everyone. Okay. दिवजोत, इतने सारे इश्यूज है देश में, अब वापस जाना और कल एनवी रमना की स्पीच पढ़ लेना. You'll feel good about your country. ठीक है, अब बताओ मुझे, what is the paradox here? Anyone? No one?
What is the paradox here? No, Shlok, I can't do that. I let the GK faculty do it. But if you been regular with my classes, you know I give you a background of the GK as well when I take an article. Okay. Mm, okay. All right. Nobody could give me a correct answer yet. Yes, Suhana. Yes, you got this right, my child. You did. Yes, Purva, you got this right too. Exactly. So everyone, read Purva, Suhana's statement. Though it involves inequality, social discrimination is present. No, no, Akshit, no. So Suhana and Purva's comment. Okay? Abhinav, what are you saying? When there is a rapid rise in economy, the lines of inequality diminish. But yes, yes. Everyone in the app, read Abhinav's comment. That is what is the paradox here. Exactly. तो पैराडॉक्स क्या है? आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स क्वेश्चन आ सकता है, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स क्वेश्चन आ सकता है. Yes? Alright. So left unaddressed this toxic combination of high inequality and low social mobility. ये टॉक्सिक कॉम्बिनेशन क्यों है? एक तो मोबिलिटी हमारे कंट्री में पुअर है, सोशल मोबिलिटी कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो आपके लिए राइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, प्लस ऑलरेडी इनइक्वालिटी इतनी हाई है हमारी कंट्री में, तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सिचुएशन को टॉक्सिक और खराब बना देता है. दिस विल लीड टू अ ग्रेटर डिमांड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा लग रहा है कि कम्युनिज्म आने वाला है. The clamor for levying a wealth inheritance tax will only get louder. अभी देखो जैसे मैंने आर्टिकल चल के इसने बोलता मैम ये रिच लोगों पे वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं, ऐसा ये देखो दिस गोइंग टू द क्लैमर इज गोइंग टू इंक्रीज, पीपल आर गोइंग टू शाउट वेल्थ टैक्स लगाओ, as will demands for equal taxation for income from labor and capital, considering those at the very top of the income pyramid get a larger share of the income from the capital. कैपिटल से उनका लार्जर इनकम आता है तो कैपिटल पे भी इक्वल टैक्स लगाओ. पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी विल डिमांड बाउइंग टू सच डिमांड्स मोर सो व्हेन एवरी एक्शन इज व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ पॉलिटिक्स. तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? पॉलिटिकली भी अगर आप प्रेशर डालते हो तो ये डिसीजंस आ सकते हैं. अरेस्टिंग दिस स्लाइड इज नॉट गोइंग टू बी इजी. द वर्ल्ड ऑफ होरेशियो एल्गर सीम्स डिस्टेंट. ये लाइन का क्या मतलब है? Infer karo, even if you don't know who Horatio Alger is. Can you infer? Anyone? पैराडॉक्स नहीं आया समझ में? मैं फिर से समझा दूंगी. Others? ईशान मैंने कल हिंदू एडिटोरियल क्लास में ली थी. 10th of December को आई थी इंडियन एक्सप्रेस में. Okay. So, Horatio Alger, anyone? Okay. Yes. Yes. So basically, the world of utopia is far away. Yes, you can say that. Absolutely. He used to write a lot of novels on how poor boys would arise to become, again, slumdog millionaire. So rising from a slum to become a millionaire. He would write stories of that sort. But as I look at his idea of utopia is far, far away. That is what the line means here. Okay. Exactly, Abhinav. Yes, you're right. All right. So let me share today's Hindu and Indian Express and tell you what are the important articles you should be reading. Okay. Please give me a second, everyone.
Here we go. What watch is it? Omega? Okay. Here we go. Let's look at the articles that are important. Actually, tone of the author. I forgot. Sorry. Tone of the author. Yes. Pooja, the second article was from the Indian Express. Tone of the author. Previous article. Abhinav, yes. The second Abhinav in the app, yes, it's different. In reality, it's different. All right. Tone of the author. Exactly, Palak. Yes. 1984. George Orwell wrote, he predicted everything in advance. Analytical? Yes. Analytical. Mostly analytical. Agreed. All right. Now let's move to the newspapers. This is Hindu and Indian Express. Here we go. The first article. Please skim through it. Okay? Skim. The second one. Skim. Okay? Skim. Because if you know about what is happening in Afghanistan, you should only be skimming it. If you don't know about that, please read that in detail. Skim. Okay? So next page. Most of the articles in today's newspaper are to be skimmed. I'll tell you क्या होगा 12:30 क्लास में. 12:30 on the BBA YouTube platform. I'll be starting with a new series today. Grammar miscellaneous questions, error spotting. I'll give you a sentence broken into parts. You have to identify a sentence part that is incorrect. Okay, so 3 classes. It's a new series that I'm starting today. Make sure you find out the YouTube channel, BYJU'S Exam Prep BBA. Subscribe to the channel, find my video, set a reminder for it. It's going to be live at 12:30 today. Okay, now let's look at the other. Okay, प्लीज इसको डिटेल में पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डू यू लुक एट द पिक्चर? इट्स अ कोल माइन नियर धनबाद. Okay, please read this article. Next, principles over profit. Skim. ठीक है, नहीं, इनफैक्ट डिटेल में पढ़ना है इसको. Yes, read this in detail. Okay, next one. Don't read this. Let's come to the Indian Express. Yes, Abhinav, it is. The second Abhinav in the app, what does tone of the author refer to? On YouTube, please find 3 of my videos that I've made on how to identify the tone of the author. Just type my name, Alpa Sharma, tone of the author. You'll find 3 videos. Watch all the 3 videos. You'll know how to identify the tone of the author. Here we go with the second one. Okay. You read this article, okay? Read this, read this article. It's going to be a fun read. Okay. Next, the case of deeper technological ties with London. Skim. The kind of engineering education we need. Yes, read this. Karnataka government has done right thing by adding eggs to midday meals. यूपी में ऐसा हो सकता है कभी? Skim this article. A dangerous churn in Afghanistan, Pak. Skim. Kashi revamp.
आई वॉज वंडरिंग आज आर्टिकल आया कैसे नहीं है काशी रिवैम्प पे. हिंदू कल देगा. काशी रिवैम्प इज emblematic of new common sense. Read this. When power blends with religion. Read this. If PM's work echoes of Maratha Queen's legacy, chhod dena. Yes, yes, yes. WHO must take care its communication on Omicron doesn't add. Yes, isko पढ़ लेना detail में. Okay. All right. By the way, it was a premium article, the pandemic one that we did today, worsen inequalities in India. So maybe that's why you did not have an access to it. Okay. All right. So that is all. Do you have any questions? Do you have any questions that you would want me to answer? Otherwise, I'll see you at 12:30, everyone. Okay. Thank you, everyone. Have a very, very good day. God bless all of you.